Hello students, the question is a small point of mass small m is placed at a distance 2r from the center O of a big uniform solid sphere of mass capital M and radius capital R. The gravitational force on small m due to capital M is F1. A spherical part of radius r by 3 is removed from the big sphere as shown in the figure, and the gravitation force on m due to the gravitation force on small m due to remaining part of m is found to be F2. The value of ratio F1 is to F2 is, and the given options are option 1 16 is to 9, option 2 11 is to 10, option 3 12 is to 11, and option 4 12 is to 9. So the problem is based on the topic gravitation. The situation is something like this. There is a big sphere, and from this big sphere a small section or a small sphere is cut of radius r by 3. There is a certain mass small m located at a distance 2r from the big sphere basically. Now this big sphere's original mass was capital M and its radius is r. So the shaded portion is the big sphere and the removed section is white as shown in the figure. This blank section is the removed sphere. Now, first of all, we have to calculate the mass which is removed, which is utilized for the further calculations. So, the mass which is removed from this big sphere can be calculated by the concept that the volume mass density remains same. So, the volume mass density is given by mass per unit volume, mass upon volume, the original mass capital M divided by volume 4 upon 3 pi r cube. This must be equal to, for example, the removed sphere's mass is x, the removed section mass is x divided by 4 by 3 pi, and the radius of the removed section is r by 3 whole cube basically. Now this 4 by 3 pi cancels from both sides, and we get the value of x as equal to capital M multiplied by r by 3 whole cube divided by r cube. So this value comes out to be m upon 27. Now this value we can utilize for further calculations. Now according to the problem, the mass capital M, when there is no removal of any sphere, and the force between this capital M and small m is given by F1 according to the problem. So F1 is equal to, according to Newton's law of gravitation interaction between two different objects, g m1 m2 upon r square. From this formula, g into capital M into small m divided by the distance square, the distance between the bigger mass, the bigger sphere, and the smaller point mass. So this is 2r basically, so 2r square. Now let us call this as equation 1. We call it as equation 1. Now we have to calculate the force F2. The force F2 is basically the force due to the remaining mass or the remaining sphere. Remaining means the sphere which is remained after the removal of the smaller sphere here. Now this force is given by the original force of attraction, which we have calculated earlier, g m capital M into small m upon 2r whole square, minus the force between the removed section and the small m mass. Now force between the removed section and the mass is given by g times the removed mass is m by 27 multiplied by small mass is small m, and the distance between them can be calculated. This distance, the distance between the center of the removed sphere, and the mass m. Now this distance can be calculated by the sum of r and r by 3.
So this is equal to 4r by 3. So we have to put here 4r by 3 and its square. After solving it, this value comes out to be 11 upon 48 gm into small m divided by r square. So this is F2. Now we have to find out F1 is to F2, F1 F2 ratio. So this F1 F2 ratio now, it comes out to be basically gm small m upon 4r square, which is calculated in equation 1, and divided by F2. F2 is 11 by 48 g capital M small m upon r square. After solving it, this value comes out to be 12 is to 11. So we can say that option 3 is correct here. तो यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है ग्रेविटेशन टॉपिक से. इसमें कहा गया है कि एक स्मॉल मास है, पॉइंट मास है जिसकी वैल्यू है स्मॉल m. उसको प्लेस किया गया है 2r डिस्टेंस पे एक बड़े यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के सेंटर से O से, और उस बड़े स्फीयर का जो मास है वो है कैपिटल M और रेडियस है कैपिटल R. इस फर्स्ट केस में ग्रेविटेशन फोर्स जो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लगता है वो है F1. एक स्फेरिकल पार्ट जिसकी रेडियस r/3 है उसको रिमूव किया गया है बिग स्फीयर से, जैसे कि इस फिगर में शो किया गया है. हमें बताना है सबसे पहले तो जो फोर्स है इस रिमूव सेक्शन बचने के बाद उसके और स्मॉल m मास के बीच में वो है F2. हमें बताना है F1 F2 का रेशियो. तो F1 F2 का रेशियो निकालने के लिए पहले हमें रेस्पेक्टिव वैल्यूज F1 F2 की निकालनी होंगी. F1 की वैल्यू निकालना बहुत ईजियर है क्योंकि ये जस्ट एक बिगर मास बिगर स्फीयर और एक स्मॉल पॉइंट मास स्मॉल m वैल्यू का उसके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स से निकाला जाएगा, जो कि बराबर होता है gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली. तो उसे हमने इक्वेशन 1 में लिख दिया, F1 इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r होल स्क्वायर. रिमेनिंग सेक्शन या रिमेनिंग स्फीयर के बीच में और स्मॉल m मास के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है F2 निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो रिमूव्ड स्फीयर है, रिमूव्ड सेक्शन स्फीयर है, उसका मास कितना है. तो उसके लिए हमें जो कंसेप्ट यूज़ करना है वो यूज़ करना है कि जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है यूनिफॉर्म. तो इसलिए ओरिजिनल मास कैपिटल M डिवाइड बाय द वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब बराबर रख देना है रिमूव्ड सेक्शन का मास, फॉर एग्जांपल हमने माना x डिवाइड बाय रिमूव्ड सेक्शन की का वॉल्यूम 4/3 पाई r/3 होल क्यूब. इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की m/27. तो इस तरह से हमें पता चला कि जो रिमूव्ड स्फीयर है उसकी जो मास है वो m/27 होगा. अब हमें निकालना है ग्रेविटेशन फोर्स उस रिमूव्ड स्फीयर, उस पूरे के पूरे जो रिमेनिंग बॉडी का और स्मॉल m मास के बीच का. तो वो बराबर होगा द फोर्स बिटवीन द ओरिजिनल बॉडी and the small mass minus the removed mass and the small m mass. तो इस तरह से हमने g पहला टर्म लिखा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस रिमूव्ड स्फीयर जो है उसके और स्मॉल m मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स. यहाँ पे हमने m/27 पुट किया क्योंकि रिमूव्ड स्फीयर का जो मास है वो m/27 हमने कैलकुलेट करके निकाला है. दूसरा मास हमारा यहाँ पे स्मॉल m ही है जो कि हर केस में हमने यूज़ किया है. यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये है कि जो रिमूव्ड सेक्शन का जो सेंटर है उससे लेके स्मॉल m मास के बीच की जो दूरी है वो निकालनी होगी, और इस ज्योमेट्री से आप साफ साफ देख सकते हैं वो बराबर होगी r प्लस r/3 यानी कि 4r/3, और उसका हमें स्क्वायर कर देना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली. सॉल्व करने पे इसका रिजल्ट आता है 11/48 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. हमें रेशियो फाइंड आउट करना है फोर्स F1 और F2 का. तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं. ये रेशियो निकल के आता है 12:11. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.